The types of module. If a variable needs to be used across various modules, it needs to be declared as a global variable. Suppose one variable that you have to define, and that variable you have to use anywhere. So in that sector, we are using the global variable. The global variable is a variable which can access anywhere. However, the global variables are prone to accidental modification which impact all modules. Global variable means what? Anybody can access it. So anybody can modify the value. It is not any kind of privacy. Okay. That जोड़ा बाहर रुए जो variable is a common, so any person can access the variable and use it. So it is not having any kind of security. Okay. Then comes to the parameter. Parameter are like bridge between procedure and calling code. Okay, so if you want to pass any value to a procedure or a function, so we're using parameter. Okay, it comprises the data that is used and processed by the procedure. It can be a variable of the numeric or character data type. Okay, it are used to perform the following tasks. One is send data to a procedure, retrieve data from a procedure. Okay, if you want to send a data from procedure, you can use the parameter, and if you want to retrieve a data from procedure, you can use the parameter. Okay, so it is a way of retrieving a information. Basically, it is used to interacting with the user. Means at a runtime you have to pass a value. Okay, so that it is called as it is a bridge between a procedure and calling code, and comprise the data that is used and processed by a procedure. Okay, it can be a variable or numeric or a character data type. So it may be variable or it may be a numeric data type. Okay, so it are used to perform the following tasks like send data to a procedure, retrieve data from procedure. Okay. So how you define? The first we define what? Procedure, procedure name, input. Input means you are giving a value to the procedure. Output means you are getting a value from a procedure. Okay, so procedure, input parameter, then output parameter. So input means you are giving a value, output means you are retrieve the value. So therefore, defining a procedure, procedure name, then input value, then output parameter is. parameter data type माने मतलब value pass करेगा run time में तो data type value numeric value नबो कि character value नबो ये हमें character value दो बुझेला आज्ञा ଗୋଟେ procedure define କରାला procedure average score input numeric माने हमें तीनटा वैल्यू as a parameter pass करियो then output मन आसीबो output is also a numeric then procedure accept तो मोड procedure define कली तो procedure accept output character output numeric ହେଲା माने इटा कौन हो ना हमें जहाँ भी वैल्यू दबा या
accept or retrieve करियो हमर parameter टा होची two type, one is input another is output. Input means you are आउटपुट giving a value to the procedure, and procedure को मैं value देवे. Output means I am getting the value from the procedure. So begin character C, student name, numeric n counter, test 1, test 2 and test 3. Okay, so here I am defining three variables: test 1, test 2, test 3 टेस्ट 3 एवरेज and counter. Okay, so an average value. So here we define that we have to accept the 10 student information, so 0 to 10, and here we are calling accept procedure. When you call accept procedure, then you pass a value, student name, test 1, test 3 1. This is accept. In accept, three variable we define, four variable we define. Name, स्टूडेंट नेम three इन द test. टेस्ट The name is the output, it is a character. The student name, output numeric test 1. Test 1 is numeric. Test 2 is a numeric. Then test 3 is a numeric. न्यूमेरिक Okay, so it is enter the value, enter a student name, then display enter test 1 score, then test 2 score, then test 3 score. Three test score mark were show you. Then we're defining a average score. Input numeric test 1, numeric test 2, numeric test 3. So it is what? माने ए एवरेज प्रोसीजर रे हमें तीनटा इनपुट दवा, इनपुट देले ही कैलकुलेशन है कि एवरेज भारी सेति पे तीनटा रहला, इनपुट न्यूमेरिक टेस्ट 1, इनपुट न्यूमेरिक टेस्ट 2, इनपुट न्यूमेरिक टेस्ट. Input were given, then we are getting average. Average as output. Okay. এটা ଟିକେ বেশি কমপ্লিকেট হলো মানে এটা তো মানে ডাইরেক্ট भी করি পারতাম না The module wise कले ना पूरी कॉम्प्लिकेटेड है. देखो एटी खाली गोटे प्रोसीजर डिफाइन करा, हां एटी गोटे प्रोसीजर डिफाइन करला. अच्छा मु कोन करबी ना स्टूडेंट रो मार्क नेबी तारा एवरेज बार करेंगे, एवरेज बार करिया हां एवरेज बार करे मु आउटपुट यूज करबी, आउटपुट कैरेक्टर, आउटपुट न्यूमेरिक, आउटपुट न्यूमेरिक, आउटपुट न्यूमेरिक. द कैरेक्टर का पाई रहबी स्टूडेंट नेम पर रहबो एम पाई तीनटा पाई मोर रहला कोन तीनटा टेस्ट पाई टेस्ट रिजल्ट. अच्छा ए जो एक्सेप्ट रे मु जो वैल्यू कोन करबी आउट करबी सेटा इनपुट ही हो एवरेज स्कोर सेटा ऊपर हां एवरेज स्कोर ये वाला input numeric, input numeric, input numeric. Output is what? Numeric. Is it is written you out. Then it is a what? Declaration of your procedure. Then ক্যারেক্টারটা কেমতি আউটপুট আমার রইলা এটা ক্যারেক্টার তো ইনপুট রয়া কথা না output ना हम शो करिवो. Output means কিন্তু what? यूजर तो पास करियो ना ক্যারেক্টারটা Out. It is opposite. Accept means what? You are taking the data from user. But you are passing the value to where? You are passing the value to the another procedure, na? So that it is out. তাহলে আউটপুট হবে The numeric counter रहला कि हम 10 टाइम स्टूडेंट रे इंफॉर्मेशन स्टोर करियो 10 टाइम्स हां तापर टेस्ट 1 टेस्ट 3 रहला. तापर एटी एवरेज रहला.
एटा मोर काउंटर चलिबो 0 to 10 जाय काउंटर चलला एनकाउंटर लेस देन 10 the call accept student name test 1 test 2 test 3 okay तो तीनटा टेस्ट मार्क से एक्सेप्ट करा then call average average function को कॉल कला average रे कोन रहिसो इनपुट नंबर टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3 आउटपुट के कोन average आसी डिस्प्ले को करियो मतलब स्टूडेंट नेम डिस्प्ले करियो और एवरेज डिस्प्ले एठी कोन होला एठी जो हमें डिफाइन कले एटा इंप्लीमेंट आउट कैरेक्टर स्टूडेंट नेम आउट न्यूमेरिक टेस्ट 1 एठी हमें जहां सब एक्सेप्ट कला पर कोन हो आउट पैरामीटर थ्रू रे हमें को पास करियो कोठी मींस डिस्प्ले को पास करिए एवरेज रे एटा एटी पास करियो एठी मैं आउट रहलो बुझेला आगे सर लास्ट रे आउ थरे प्रोसीजर रखिया कोन नेसेसरी थिला माने पूरा लास्ट रे जोटा आपण देखले सेकंड पेज रे ऊपर होची डिक्लेरेशन होला हां ऊपर माने प्रोसीजर एवरेज स्कोर इंप्लीमेंट है नहीं ना ओहो अच्छा डिफाइन कर दो किंतु इंप्लीमेंट करियो ना देखा आगे सर when it comes to a function like the procedure function is a block of statement that perform the specific task okay the procedure is also used to do a specific task function is also used to do a or to perform a specific task okay but differ from a procedure as the procedure doesn't return any value the procedure doesn't return any value in the calling code while function return a value in a calling code after it is executed so that is the one difference between function and procedure function and procedure procedure doesn't return any value function returns value it has a call return mechanism that includes the following steps the function is called from a calling code so where your function code called so where you call that is called as the calling code the set of operation within the function are executed then the execution is returned to a calling code along with return so when you execute then it is call in a calling code and return you any value okay again any doubt no sir a function has the following declaration format one is function another is function name okay first we define a function then function name
consider an example where need to write a pseudocode to accept 3 number from a user and display the result. ஆமா brother. It is a flow chart. Start numeric n norm1, n norm2, n norm3 and so on. Okay, so we are defining the variable and it is process and giving you sum. So next it is accept a number. Accept n norm1, n norm2 and n norm3. Okay. After accepting, then we are creating a subroutine. Subroutine means it is breaking them into another part. Okay. So sum equal to add. So add is a procedure or function. In add, it is added the number norm1 plus norm2 plus norm3. Then it is return. Adding it is return the value and storing the end sum. This is the sum and end. Okay. सर ए जो सबरूटीन जो हला सेठी हमें कॉल करलेनी जे सबरूटीन रे ए जो मझरे जो n सम इक्वल्स टू ऐड हला सेठी तो हमें नॉर्मल स्यूडो कोड रे तो कॉल करथाने ना माने ऐड टा जेतु अलगा ये रे रहला तो ऐड को कॉल करथाने ना एडी कॉल हला नि सम इक्वल्स टू ऐड ओ सेटा सेमति लिखाबो I guess so. Function add numeric n norm1, n norm2, n norm3, n sum. Then we are accepting the value norm1, norm2, norm3. Then we are calling a function call add. When we are calling a function, it is storing the n sum. Sum guda. Okay. Then this n sum. Display and sum. Then function add. Then result equals to norm1 plus norm2 plus norm3. इटे दी थरो कहीं कराला दी थरो कहीं कराला पूरा दी थरो कराला काहे ना मझिरा हमर रहला ना n सम रे हम कॉल करले तापरे डिस्प्ले n सम रहला तापरे एंड गला पर पुण फास्ट एटे फंक्शन डिफाइन होला फंक्शन भीतर हम तीनटा वेरिएबल डिफाइन करले तीनटा वेरिएबल डिफाइन करले और n सम रहला तापरे एटे हम एक्सेप्ट करले कॉल ऐड फंक्शन को कॉल करले अच्छा अच्छा एपन माने ये हेनी माने एडिशन टा हेनी एपन एटी एडिशन होला ओ हो बुझली देना माने लास्ट रे लिखाला फंक्शन कोन हैला बोली लास्ट रे फंक्शन कामटा लिखाला बिगिन और एंड करी आउ एडी जो फंक्शन ऐड लिखला पूरा स्टार्टिंग रे सेकंड लाइन टा जो फंक्शन ऐड लिखि की से गोटे ये देला ना कमेंट जो देला फंक्शन डिक्लेरेशन बोली सेटा काहे लिखाई माने सेटा बोले शो कराई जे फंक्शन डिक्लेयर कराई दे कमेंट लाइन इज व्हाट describing the purpose of writing the code हम काहे से बुझला आज्ञा ठीक है ऑर्डर पंचायत से नेक्स्ट क्लास करिए आगे सर थैंक यू सर